Hello everyone. Today we are going to discuss about numerical problems of class 9 science chapter 11, that is work and energy. See the page number 154, example 11.6. An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. Got it? इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है एंड एक ऑब्जेक्ट है एंड उस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पर रखा गया है। ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर रखा गया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर रखा गया है। कोई एक हाइट पर उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है एंड उस ऑब्जेक्ट का मास है 12 kg। गॉट इट? फिर क्या हुआ? इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल एंड इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी है 480 जूल। गॉट इट? Find the height at which the object is with respect to the ground. Got it? हमें उस ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करना है। हमें उस ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करना है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर रखा जाता है, दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ दिया गया है एंड वो पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, दैट इज 480 जूल। हमें हमें क्या फाइंड करना है? हमें उस ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करना है। उस ऑब्जेक्ट को किस हाइट पर रखा गया है, किस हाइट पर रखा गया है, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा, डोंट वरी। सी हियर what is given here, mass 12 kg. Got it? Let's take mass, that is m is equal to 12 kg, and potential energy, that is ep is equal to 480 joule. Got it? And g is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square. Got it? G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ का ग्रेविटी है। गॉट इट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। We know EP is equal to mgh. Got it? So potential energy, that is EP is equal to 480 is equal to, what is our m? M is equal to 12. What is our G? G is equal to 10. What is our H? H is equal to question mark, that is H. Now we can write 480 is equal to 12 into 10 is equal to what? 12 into 10 is equal to 120 into H. Got it? So now we can write 120 into H is equal to 480. Okay, H is equal to 480 divided by 120, 0 cancel, and 4 12s are what? 4 12s are 48. Got it? 4 12s are 48. That is 4 meter. Got it? That is 4 meter. उस ऑब्जेक्ट को 4 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को 4 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, so this is our solution. Thank you. Like, share, and subscribe my channel.